can't curtail, my lord, and fetter the powers of the CBI. See, now, who are the applicants? Where does their name appear? But Mr. Diwan, it should have been in their respective names. That is so. Because you are asking for an impasse on an order. It is Mr. Dr. Gautam Pal. Have you stated anywhere in the? Yes, it's in the impugned order. It's in the order which we are seeking a stay. If your lordship has, it's I. Mr. Diwan, Planet Senior Counsel for the applicant number 1, 2, and 3, and also Mr. Rahim appearing for the. Lord, I am for respondents 1 to 23 in the main SLC. Main respondent number 1 to 23. Except R50. I'm not for R50. 1 to 14 and 16 to 23. In CA number 3212 hyphen 13 of 2023. On going through the materials disclosed, we direct that investigations so far as the applicants are concerned may continue to be conducted by the Central Bureau of Investigation, but until the next date of hearing of the instant civil appeal, they shall not be. Is Gautam Pal, Dr. Gautam Pal, and the third applicant is Dr. Partha Karmakar. Dr. Partha Karmakar. So far as the directions of the High Court is concerned, contained in the order passed on 18th October 2023. 18th. Where is that? You will find it at page 18 of 222598. It's a thin IA. As far as the order of the learned single judge of the High Court on 18th October 2023 is concerned,
we direct that the SIT may continue with investigation as directed, but CBI. no, the order says, no, what is SIT, what is CBI? Here, my lord, the order doesn't say about SIT. No, you can come, It's Yes. page 21. That's a new member in the SIT, but the CBI is also interrogating. So both can continue, my lord. But no coercive steps if your lordship. जी तो थोड़ी देर और उसके बाद क्लियरिफिकेशन मामले पर जस्टिस अनुरुद्ध बोस सुनवाई करने वाले हैं। 16 नंबर पर आपकी सुनवाई होगी। मात्र आपको 5 मिनट का इंतजार या 4 मिनट का इंतजार करना है और उसके बाद जस्टिस अनुरुद्ध बोस B.ed वर्सेस BTC मामले की सुनवाई करेंगे। Of IA number 225598 taken out in connection with the same civil appeal, but they shall not be arrested until the next date of hearing of this batch of appeals and petitions. That is, next date of hearing of this batch of we are following this order as it has been submitted before us by Mr. Diwan that Dr. Gautam Pal had joined as president of the organization August 24th August. on 24th August 2022 and Dr. Partho Kormakar. Is he a doctor too? थोड़ी देर और उसके बाद जस्टिस अनुरुद्ध बोस जी B.ed डिग्री धारकों के लिए सुनवाई करेंगे। जस्टिस अनुरुद्ध बोस और जस्टिस बेलायम त्रिवेदी की ये बेंच होगी। सबसे खास बात ये है कि कोर्ट 16 नंबर पर सुनवाई होनी है और अभी 6-7 चल रहे हैं। बहुत जल्दी ही आने वाला है नंबर, क्योंकि जस्टिस बोस बहुत मूड में दिख रहे हैं, फटाफट केसों को सुन रहे हैं। Gautam Pal had assumed office, charge of the office. But both will continue to, my lord. We've said investigation can continue. We don't need to give further handle. So they continue to cooperate. That's all. They'll continue to cooperate. One line, my lord, if your lordship would, my lord. High Court is will ensure they continue to cooperate. That's good. One word, one line from your lordship, my lord, they will continue Don't to need- cooperate. don't Otherwise, my need lord, line. sometimes they fall sick and they land up in the hospital for I years. think falling sick in this city and several others is not necessarily voluntary. Great, your life. That is standard. Calling sick, it's standard. Everybody, chief ministers, etc., they keep on. Great, your life. Six. Your Lordship. Your Lordship, letter has been circulated for us. Adjourned as per letter. Your Lordship, in item number 7, there is an एडवोकेट नेहा राठी और प्रशांत भूषण शायद B.ed की तरफ से अपीयर हों। वैसे अभी अमित पवन दिख रहे हैं आपको सेकंड लाइन पर। जस्टिस अनुरुद्ध बोस के बगल वाली जो एक कॉलम आपको दिख रही है, वहां पर अमित पवन व्हाइट कलर में आपको दिख रहे होंगे, व्हाइट बाल की तरह। तो कुल मिलाकर के जस्टिस 16 नंबर पर सुनवाइयां होनी है B.ed वर्सेस BTC विवाद का, और वो बीच बीच में आपको बताया जाता रहेगा। आप लोग एक बार कंफर्म करें कि आवाज आप तक क्लियर जा रही कि नहीं जा रही। This must have counted based from original order. we have You are counting from the date of order of review. because that is where But you must have challenged original order also. I have challenged the order because So therefore, there is no SN mistake. then your Lordship can this review because that I was pursuing my remedy before the High Court. See, if you confine your challenge only to the I'll written confine that. I'll because both are on the limitation. The petition was dismissed on the High Court. Confine it, you will have to challenge the original also. So, Your Lordship, what has happened is original order, they dismissed the writ petition on the basis of delay. That there is an inordinate delay in approaching the SCAT, which is Central Administrative Tribunal, and therefore we are also not considering this. So, throughout the pendency of the list, Right. no merits have been discussed or You don't deliberated. challenge the original order. How can you challenge the order of review? Because you are not challenging the original, you are challenging only the review. Your Lordship, I have to somehow come out of this rigmarole as to because I was pursuing my remedy.
Sir, there is no mistake in the order. There is a delay of 1,343 days. From the original order. If you challenge, yes. If you are The original order. so how this MA would be maintainable? Then, Your Lordship, can I submit that? See, come to your application for condonation of delay. Please, Your Lordship. Page 196. Please, Your Lordship. एक बड़ा सवाल आप लोगों के मन में है कि बीएड वर्सेस बीटीसी के किस मामले की सुनवाई है। तो देखिए, ये क्लेरिफिकेशन याचिका की सुनवाई आज होनी है और क्लेरिफिकेशन का मतलब ये है कि आज इस मामले की सुनवाई होनी है कि किसको एलिजिबल रखा जाए और किसको नहीं रखा जाए। और आज जो आप लोग कोर्ट के लगातार ये सवाल पूछते हैं कि कोर्ट में कैसी कार्रवाइयां चलती हैं, कैसे जजेस उस चीज को सुनते हैं, आपकी स्क्रीन पर सब कुछ विजिबल हो रहा है। और जहां तक आप इस बात की बात कर रहे हैं कि भाई बीएड की तरफ से कौन एडवोकेट है, तो मैं थोड़ा सा आपको दिखाने की भी कोशिश करूंगा और अगर आपको दिख रहा होगा मैं आपको थोड़ा सा यहां पर पॉइंट करने की कोशिश करता हूं। बीएड की तरफ से अभी फिलहाल अमित पवन यहां पर दिख रहे हैं और जैसे ही नंबर और नजदीक आएगा 2-3 एडवोकेट आपको और भी देखने को मिल रहे हैं। एक स्क्रीन पर आपको यहां पर अमित पवन दिख रहे हैं, दूसरे स्क्रीन पर दूसरे कैमरे से देखेंगे तो आपको अमित पवन यहां पर भी दिख रहे हैं जो बीएड का पक्ष यहां पर रखने वाले हैं। अब बड़ा सवाल आप सबके मन में होगा कि मैं आपको थोड़ा सा यह बताता हूं और समझिएगा कि क्या चीजें चलने वाली है और सुप्रीम कोर्ट में किस प्रकार की न्यायिक व्यवस्था चलती है और कैसे मामलों को सिर्फ 1-2 मिनट सुनकर के नेक्स्ट डेट के लिए भी टाला जाता है। ये भी सुप्रीम कोर्ट की एक चीजें हैं जो आप सबको जानना बहुत जरूरी होती हैं। आप सब एक बार कमेंट करके बताएं कि आपको आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। आज किस चीज की याचिका है और क्यों ये महत्वपूर्ण है, अगर मैं वो डिस्कस करने की कोशिश करूं तो सबसे पहले भाई आज आप लोगों की क्लियरिफिकेशन की याचिका जो दायर की गई है, जिसमें ये क्लियरिफाई होना बाकी है कि किसको एलिजिबल कर रहे हैं जस्टिस अनिरुद्ध बोस। उस फैसले के अकॉर्डिंग उस पर फैसला थोड़ी देर में जस्टिस अनिरुद्ध बोस और दूसरी जो आपकी जज दिख रही है जस्टिस बेलायम त्रिवेदी, वो दोनों इस मामले को सुनवाई करेंगी कि 2023 से पहले यह फैसला लागू होगा या 11 अगस्त 2023 के बाद यह फैसला लागू होगा। यह चीज क्लियरिफाई करने का काम कौन करेगा, वो जस्टिस अनिरुद्ध बोस करेंगे जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। जहां तक बड़ा सवाल यह है कि बीएड डिग्री धारकों की तरफ से कौन से एडवोकेट है, तो अभी तो बहुत सारे एडवोकेट्स आए नहीं है क्योंकि अभी टाइम है, थोड़ा सा टाइम जरूर है 5 से 7 मिनट का। लेकिन बीएड की तरफ से अगर मैं आपको एडवोकेट दिखाने की कोशिश करूं और शायद अमित पवन की अब जो एडवोकेट्स हैं वो बुलाने की प्रक्रिया भी हो गई है क्योंकि आप देख रहे हैं कि केस नजदीक आ रहा है और अमित पवन इस वक्त बात कर रहे हैं अपने एडवोकेट से या अपने सलाहकार से, जिसमें वो सीनियर्स को बुलाने के लिए सीधे तौर पर ये कहते हैं कि जल्दी से आप सीनियर्स को बुलाइए। और आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा जस्टिस अनिरुद्ध बोस के बगल में अमित पवन बात कर रहे हैं अपने जूनियर एडवोकेट से ताकि सीनियर एडवोकेट को अब बुलाया जाए, क्योंकि सीनियर एडवोकेट के पास समय बहुत कम होता है और जाहिर सी बात है ऐसे में बहुत सारी स्थितियां ऐसी होती हैं कि उन्हें तत्काल नहीं बुलाया जा सकता है, वो और भी केसेस देखते रहते हैं, इसीलिए शायद वो डायरेक्ट कर रहे हैं। और मुझे जहां तक देखने को मिल रहा है पश्चिम बंगाल के एडवोकेट भी अब आ चुके हैं यहां पर और थोड़ी देर में अमित पवन और ये एडवोकेट और उसके साथ साथ बड़े एडवोकेट नेहा राठी भी आपको देखने को मिल सकती हैं और हो सकता है कि प्रशांत भूषण भी चैम्बर में आए, लेकिन ये क्लियर नहीं है। हालांकि फिलहाल अमित पवन जो एडवोकेट हैं वो अपने जूनियर से लगातार आप देख रहे होंगे कि जूनियर उनके पीछे भी बैठ गए हैं और इस चीज के लिए चर्चा करने के लिए आगे आ गए हैं और अब धीरे धीरे कोर्ट की कार्यवाहियां आगे बढ़ रही हैं और थोड़ी देर में इस चीज की सुनवाई होनी है। किस चीज की सुनवाई होनी है, इस चीज की क्लियरिफिकेशन याचिका क्या होगी। हालांकि एक नई रेट पिटीशन जिसका टेलीग्राम पर आप लोगों को लिंक दिया गया है वहां पर आप सब ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर भी इस केस के रिकॉर्डिंग एक बहुत बृहद तरीके से समस्त बीएड डिग्री धारकों के लिए काम चल रहे हैं, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल की स्थितियों में अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो 16 नंबर पर आपकी सुनवाई है, कुछ मिनट शेष हैं और उसके बाद बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद का फैसला कब से लागू होना है और कब तक लागू हो सकता है उस पर आपको बहस देखने को मिलेगी, वो भी जस्टिस अनिरुद्ध बोस के बेंच में। फिलहाल बेलायम त्रिवेदी और जस्टिस अनिरुद्ध बोस किसी अन्य मामले की सुनवाई कर रहे हैं, 5 से 7 मिनट और लगेंगे और उसके बाद सीधे तौर पर इस मामले की सुनवाई आपको देखने को मिलेगी। और रजत जी बता रहे हैं कि केस नंबर 9 पर इस मामले की सुनवाई है चल रही है, 16 नंबर पर आपकी सुनवाई होनी है, यानी जल्दी से जल्दी सीधे तौर पर इस मामले की सुनवाई आपको देखने को मिलेगी। I was the adopted son, Your Lordship. You kindly she believed that you will take care of yeah. and but you misused her trust. Your Lordship, it was the Your Lordship, kindly see page number 69, Your Lordship. Nothing later. What right you Kindly condone the delay, Your Lordship. How many days?
71 days delay, Your Lordship. Delay condone petition. Your Lordship is a very poor guy, Your Lordship. Mean profit has been 3,000 rupees. He's working in a shop. Kindly. We can't interfere with. Okay, highly obliged. Your Lordship, I'm appearing. I don't See, know. there was an earlier challenge Exactly, Your Lordship. which was invalidated. Your Lordship, so after that, The Andhra Pradesh High Court judgment on this striking down the section 9. Then in so Your Lordship, Supreme Court. Your Lordship, before I make out my case, it's only my duty to point out that there are multiple petitions which have been filed before this court challenging section 9 and the consequent relevant provisions of CPC, which is with respect to Order 21 and Rules 32 and 33 of CPC. Right? Now, in these petitions, Fresh one, whatever happens in that. because in Your Ladyship, I am right now concerned, I am seeking stay of the proceedings before the court, who are telling me to appear before the court and go to the man with whom I don't want to live. Now, as of today, Your Ladyship, only Forcing you. Your Ladyship, Nobody can force you. I am only on the point of first disclosing. You will be entitled to divorce after 2 years. If I will be entitled, You will be entitled to divorce. the question which needs to be answered by this court is, Section It 9. can be. Your Ladyship, may I just Agree. the absolutely right, but the difficulty, absolutely right, but the difficulty is that if I don't follow it, then my property gets attached. So essentially, if I don't subscribe to the policy of the state or whatever the judgment is. आप लोगों के एक चीज को लेकर के लगातार सवाल आ रहे हैं कि कितने नंबर पर आपकी सुनवाई होनी है। देखिए, ये तो अभी आपको डिस्प्ले बोर्ड पर नहीं हो रहा है, लेकिन मैं आपको ओरली इस चीज के बारे में बता सकता हूं कि भाई 16 नंबर पर आपकी सुनवाई होनी है। लेकिन मेन चीज ये है कि ये है आपके एडवोकेट अमित पवन, ये आप देख रहे होंगे अगर आप स्क्रीन पर, यहां पर भी बैठे हैं और ये दूसरे कैमरे पर भी अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी बैठे हैं। ये जब इस चीज को लेकर के सुनवाई के लिए स्टैंड आउट होंगे और सीधे तौर पर सामने आएंगे तो आपको समझ खुद ही आ जाएगा कि भाई आपकी सुनवाई होने वाली है। तो आप सिर्फ और सिर्फ इस चीज पर फोकस करिए, बाकी आपको थोड़ी देर में डिस्प्ले बोर्ड जैसे जैसे अपडेट होता रहेगा वो हम आपको बताते रहेंगे। बाकी आपको पीछे बंगाल के एडवोकेट भी देखने को मिल रहे हैं। अभी फिलहाल यहाँ पर अमित पवन मौजूद है जो सर्विस मैटर पे इस मामले की सुनवाई करेंगे और सुनवाई में भाग लेंगे और साथ ही साथ उनके साथ उनके वर्तमान प्रेजेंट टाइम में आप देखने की कोशिश करेंगे तो भाई वो अपने जूनियर से वार्तालाप भी कर रहे हैं। मेन चीज ये है कि आपकी सुनवाई के लिए आपके एडवोकेट ये और थोड़ी देर में सीनियर एडवोकेट भी आ सकते हैं जिसकी संभावना दिखाई दे रही है, तो इनके माध्यम से ही सुनवाई होनी है। तो आप यहां पर फोकस करके उस चीज को बेहतर तरीके से देख भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं और आप अच्छे तरीके से भी समझ पाएंगे। Coordinate bench judgment. Where is that judgment? Your Lordship, I'll just pass you the orders. Andhra Pradesh High Court judgment was delivered. Not this one. There's a judgment by which that Andhra Pradesh decision was set aside. The Andhra Pradesh decision was set aside. Yes. Your Lordship, so far as the point of validity of section 9 is concerned, that is pending before this No, court. no. There is one judgment by which there was a. There was an earlier judgment which was passed, which is opposite, which is why now the challenges before the judge. P. Sarita versus A. Venkata Subbaiah. That is the Andhra Pradesh High Court judgment. This Sharida Qureshi versus Union of India. 83. AIR 83 AP. Your Lordship, I'll just have a look at it. Kindly have a look at it before rushing to court for striking. Your Lordship, Parliamentary Act. Your Lordship, as of today, Your Lordship, that judgment today in any Get all the judgments. Judgment of First you read the judgment. the judgment of this court differing with the earlier judgment. Your Lordship, all those judgments today stand to be overruled by virtue And of. what judgment we want to know? Lordship, I'll just enter first to the judgments here. Lordship, we can just go through those judgments as well as the subsequent judgments. When will you go through? You are not arguing the matter. Your Lordship, so all those judgments, they stand to be overruled by categorical observations made by 9 English bench in Kutuswamy,
subsequent to that in the state, subsequent to that in two other constitutional matters. Has there been a direct overruling or you are asking for a constructive overruling? Your Lordship, that is my submission, and that is a submission. First was the judgment which is overruled. You have to Your Lordship, that is mine. It's not been overruled. It's the challenge is pending. That's the submission there. I doubt the judgment. You are arguing everything here. You have not prepared. Your Lordship, Get that judgment. we'll get a judgment. Yes. Your Lordship, we'll Adjourn for 4 weeks before rushing. Declare a. Your Lordship, I am not carrying this particular judgment here, but I satisfy the conscience of this court in the next year. Get that judgment. It's a letter. Letter. No preparation. Letters. Letter. 30. तो आपने देखा कि 1 सेकंड के अंदर जज साहब ने दूसरे केस को लगा लिया। तो ये 12 नंबर का केस चल रहा है और थोड़ी देर में 16 नंबर का सुनने वाले हैं। आप अपने एडवोकेट पे फोकस करिए, थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा कि 16 नंबर पर किस मामले की सुनवाई हो रही है। वैसे अभी ये 12 से 13 नंबर चल रहा है, थोड़ी देर में आपको सारी चीजें क्लियर और होगी। यानी 4-5 केस और हैं और उसके बाद सीधे आपकी सुनवाई B.ed वर्सेस BTC विवाद की क्लियरिफिकेशन याचिका, यानी सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अनुरुद्ध बोस इस चीज को क्लियर करेंगे कि भाई कब तक ये फैसला लागू रहेगा और किस प्रकार से लागू रहेगा, उस पर वो सुनवाई करने वाले हैं। बाकी देखना होगा कि जस्टिस अनुरुद्ध बोस का क्या मूड है इस मामले पर। फिलहाल तो वो किसी केस को 10 सेकंड 20 सेकंड से ज्यादा सुनने में ही इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हैं। अभी पिछला केस आपने देखा, 10 सेकंड में उन्होंने फाइल को दूसरी तरीके से फेंक दिया, यानी कि दूसरी जगह पर रख दिया और 4 हफ्ते का सीधे तौर पर समय दिया है। तो ये भी एक चीजें हैं जो आपको देखने की आवश्यकता है वर्तमान में। Institution of conjugal rights. Yes. It was pending for final hearing before a bench decided by Mr. Hegde, yeah, there was the old judgment of Justice P.A. Chaudhary of Andhra Pradesh. Yes, that was Sarita. That was set aside. That was set aside by this court. Then So there was what happened after that? Has it been reviewed? No, there is a matter which is pending where this court has issued notice. It was to come up for final hearing before a bench of 3 judges. It was last before Justice Nariman's bench. It has not now come up. Anyway, I can give the details of the number. I'll give the number to your lordship. You must have all the judgments. See, taking on a parliamentary act, Yes. preparation should be there from the side of the lawyer. Yes, my lords, I wasn't there in my learned friend, and Are you appearing in that? I'm appearing in the matter which is pending before this court. So let us see. We have adjourned. We have not. I'll give the details of the matter if your lordship please. I'll give it to your court counsel. I think 20 will not kindly recall this matter in which you lordship issued notice. Then you lordship
1 मिनट में इस मामले की भी सुनवाई खत्म हो गई। अब 2-3 केस बचे हैं और उसके बाद B.ed वर्सेस BTC विवाद की सुनवाई होना तय है। We should note this after some time. We'll have to found that cost title was defective. Cost title is amended. Now the cost title is amended. New SLP. You'll have to give me liberty to find fresh SLP. Then I have filed. Notice. Great. 10 सेकंड में इस केस की भी सुनवाई समाप्त। Status को मैं समझो। Give me proceed to pass final degree. Very great. What is the हलचल अब शुरू हो चुकी है। अमित पवन भी आप देख रहे होंगे वो सीट से अब उठने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अब B.ed वर्सेस BTC विवाद की क्लियरिफिकेशन याचिका की सुनवाई होनी है। under order 22? That you will have to for the detailed order. In this matter? In this matter, for the detailed order. Right, but thereafter you must have filed Fresh SLP. You will have to give me liberty. We accordingly dismiss the present petition. अभी आप देखने की कोशिश करिए, ये एडवोकेट अमित पवन बैठे हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं इस कैमरे पर। ये जब उठ जाए तो समझ जाइएगा कि आपके मामले की सुनवाई होने वाली है। Substitution that's what they say that some IA is pending. I need to file substitution because there are फिलहाल 13 नंबर चल रहा है और 16 नंबर पर इस मामले की सुनवाई B.ed वर्सेस BTC की होनी है 16 नंबर पर। और मुझे लगता है 10 सेकंड और इस जज साहब 13 नंबर को सुनेंगे, उसके बाद 14 नंबर आएगा, फिर 15, फिर 16, यानी 3 केस के बाद सुनवाई शुरू होगी। अभी आप थोड़ा बताएंगे कि कोर्ट के अंदर की आवाज आपको क्लियर तरीके से जा रही है अथवा नहीं? But IA, there's no need of IA. We have already. But which IA is this? Permission. Why have you asked for application for setting aside abatement in that event? There's no abatement. there's no abatement now. Now abundant caution not have done that. What abundant caution? On implication of mine. So this is application is misconceived. Shall you withdraw these 2 applications? Legal substitution application also we have filed. Will grant this leave to the legal heirs? Abatement won't come. Which date was that? That date was 4/9/2023. 825A. In view of our order passed on 4th September 2023 in SLPC diary number 28616 of 2023, we grant leave to the legal representatives of deceased Murugesan to file this petition for special leave to appeal. In view of this order, IA number 221241. Now, in view of this order, Mr. Nagamuthu does not want to press IA number 221241 of 23 and IA number 221. जज साहब किसी मामले का फैसला सुना रहे हैं और इसके कुछ समय बाद यानी 4-5 मिनट में आपको 4-5 मिनट नहीं क्योंकि बहुत कम समय ले रहे हैं तो 2-3 मिनट में आपको सुनवाई सुनने को मिलेगी। और 16 नंबर क्योंकि 13 नंबर अभी फिलहाल चल रहा है, 14, 15 और उसके बाद 16 B.ed वर्सेस BTC क्लियरिफिकेशन याचिका। These 2 IAs are dismissed as withdrawn. As unnecessary, Dismissed as withdrawn as these are misconceived. Then that condonation of delaying filing application, that will go also. IA number 221244 of 2023 shall also stand dismissed. Because you are not asking for setting aside abatement, because abatement really never. अब
कुछ लोग कमेंट सेक्शन में कह रहे हैं कि दैनिक भास्कर या उसके रिप्यूटेटिव जो आपके न्यूज चैनल हैं वो दिखा रहे हैं कि सुनवाई हो गई है और फैसला भी आ गया। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि अभी भी सुनवाई नहीं हुई है, अमित पवन बैठे हैं। तो मीडिया का किस प्रकार का रूप है वो भी आप बेहतर तरीके से देख सकते हो अगर ये वेरीफाइड जानकारी है किसी छात्र के द्वारा तो। अभी फिलहाल सुनवाई शुरू हुई नहीं और दैनिक भास्कर पर अगर इस प्रकार का नोटिफिकेशन आ रहा है तो जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर मीडिया के ऊपर भी बड़े सवाल खड़े करता है, क्योंकि सुनवाई तो अभी हुई ही नहीं तो किस आधार पर उन्होंने सीधे तौर पर इस पर आर्टिकल ही पब्लिश कर दिया है। खैर थोड़ी देर में सुनवाई होगी और उसके आधार पर सब कुछ निश्चय होगा। Yes, order 21. Yes, what does it say? SLP before filing, if a party dies, what should be done? Order 22 rule 7. Order 21 of the Supreme Court rules. Rule 7. Order 21 rule 7. Where any person is sought to be included in the petition, the legal representative of any party, to proceed in the court below, the petition shall contain. I will show you. Yes, that's what basically what you directed. See, this expression where any person is sought to be implicated is possibly not the appropriate one. Because this is to bring an action. Rule 8. Where at any time, between the filing of the petition for special leave to appeal and the hearing thereof and becomes defective. This is after filing of the. But you tell us. We'd be happy if you point out some error on our part. But we could. We'll have to take it as a last matter, because I will bring all the books. Yes. You also could permit me to argue the matter at the end of the board. I will do that. No. We have issued a notice in your matter. Yes, this is what. But in a situation of this nature, where after judgment is delivered, but before SLP file, the party dies. Then who will? Then substitution question doesn't arise. Doesn't arise. He can say to any third party. Permission to leave to file affidavit become leave to file SLP becomes necessary, because our rule says that unless you are a party, you cannot. ये वर्तमान में दूसरा केस चल रहा है जिसपे जस्टिस अनिरुद्ध बोस थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं और बहस को सुनने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ कोई भी एडवोकेट नहीं उपस्थित है, एक तरफा वो चीजों को सुन रहे हैं। दूसरी तरफ पे आप देख रहे होंगे दूसरे पोडियम पे कोई भी मौजूद नहीं है। अभी थोड़ी देर बाद 2-3 मिनट बाद इस सुनवाई के खत्म होने के बाद 16 नंबर का केस होगा और वही B.ed वर्सेस BTC विवाद का केस है। You have to file some affidavit and permission is required. That he has signed on such and such date in between this period. Correct. And therefore. So that is the order of 21st September. But in the later case, I'm not saying anything about that order. If you think we are wrong, you kindly tell us. Show us the rules. That's in the Madras High Court, the wrong procedure was being followed for about 30 years. Then kindly permit me to say this. Then we issued a notice to the entire bar, and that was fully heard on this issue. Then we passed an order that is being followed today. In 30 years, what was being wrongly. So what was the order? The order was, suppose during the pendency of the second appeal, a party dies. No application to bring on record LR or file. Straight away, one application. There was a long practice. Practice was to amend the cast rating.
You will see. But that matter was based on a division bench judgment that was long before that was delivered. That was a case where we found out that was a case where today I present a second appeal. We do not know yesterday the defendant died. So I filed it. Today I filed it. In that case, on the day when it was filed against a dead person. It's not a valid presentation. Yes. In that situation, the court said, for no fault of mine, the appeal need not be rejected, leaving it open for you to file another appeal. Instead of that, you can simply amend the ctet. Possibly that's on a different context. Yes. So far as this is concerned, you are fully agree with your lordship. Very grateful. Why are you coming up in appeal? It's a one-off situation. Short question that arises without the consideration that the back wages will be automatic. Normally, back wages should not be given or not. Lordship say when One-off situation will keep the point of law open. Then keep the point of law open. Yes. Just observe. Petition is dismissed, but point of law is kept. Thank you. Please, Lordship. Not the out of two judgments, the judgment of the trial court. Who's the person? चलिए 16 नंबर अगला केस B.ed वर्सेस BTC विवाद की सुनवाई का फैसला आने वाला है। अमित पवन उठ चुके हैं BTC की तरफ से मीनाक्षी अरोड़ा और ये सुनवाई शुरू हुई आपकी। We haven't received any letter. 78. Item is 17. I'm for petition. Yes. My lord, there are certain crooks in this matter. First of all, there is a violation of Punjab Police Rules 16.381 and 2. The sanction from the district magistrate was not sought by the SSP to initiate domestic inquiry or departmental inquiry. Secondly, in departmental appeal, the implement has been reduced to 2. Sorry. The punishment has been reduced to 2 increments, stoppage of 2 increments. Yes. Yes, it has been reduced. Against which you filed suit, that was dismissed. First appeal, second appeal, everything is dismissed. Yes. So what happens? But in departmental inquiry, the issue was not created. The issue which was framed that says that the petitioner has not served notice under section 160 of CRPC to the suspect. Now, it's only question of punishment. Punishment has already been taken care of by the appellate authority. Then you file suit, dismissed. First appeal dismissed, second appeal dismissed. Dismissed. You kindly pass the word notice. Arguing consideration or her own late another both. Who? Miss Anita Shenwal. After vacation, accommodation is asked for the petitioner. Least after vacation. 19. Please, my lords. Here, my lords, when I applied for the job, it was not a tenured post. अनिरुद्ध बोस फिर से इस मामले को सुनना चाहते हैं और उन्होंने थोड़ा सा टाइम देने को कहा है B.ed वर्सेस BTC विवाद के मामले को, और फैसले के लिए उन्होंने क्या कुछ कहा है वो थोड़ी देर आप देखिए और उसके बाद सारी चीजें क्लियरिफाई हो जाएगा। फिलहाल उन्होंने थोड़े समय के लिए वक्त लिया है B.ed वर्सेस BTC विवाद पर जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने। The rules come in 2014. Now what the division bench has done. That advertisement was for contractual appointment. No. Those were for regular appointments. I'll point out, my lords. If your lordship sees the appointment letter itself at page 87, paragraph 2. Page 87. Yes, paragraph 2. That's a sample appointment. Appointment will be on permanent post. Temporary. During the probation period of 2 years. Adjusted in regular service only if. Yes, there is no problem about my conduct.